The same story. Remember, we just told you and we played out that reaction of Madhumita Shukla's sister and how she had put a plea before the Supreme Court. Now the Supreme Court has issued a notice on that plea of the deceased poetess Madhumita Shukla's sister against the premature release of the two convicts who were involved in the killing, in hatching a conspiracy that led to the death of a sister. And in fact, now that plea is before the Supreme Court. However, we are given to understand that the Supreme Court has not yet passed any order against the premature release of the Tripathi couple. That's the latest that we are picking on as this big piece of breaking news is coming to us from the state of Uttar Pradesh. A lot of controversy that this entire story is generating. 2003 is when the conspiracy was hatched, and 2007 there was a conviction. However, this was a lifetime imprisonment that was granted to the Tripathi couple much later, and now there is a release that's been ordered by the state of Uttar Pradesh, and that is what is being questioned by the deceased sister. The plea is before the Supreme Court. Let me take this across to my colleague Ananya Bhatnagar, who's joining us on the broadcast. Ananya, wanted to understand, the Supreme Court has not really passed any order against the release of the Tripathi couple. So how much of a significance will this plea really have? Well, definitely, Griya, this matter, which has been there since the last 20 years, was killed in May 2003, and following which in 2007, the couple was actually, convicted for her murder. In fact, henchmen had gone to her house and killed her while she was living in the paper mill colony of, in fact, Lucknow. And following which, it had an uproar because Amarmani Tripathi was a very important name at that point of time when it comes to the UP politics. And now, finally, almost after 20 years, he and his wife, Madhumani Tripathi, would be released from the jail on the grounds that they are unwell, and secondly, of their good behavior inside the jail. Remember that this is not the first case that has come to light. It was the case of Bilkis Bano, the rapist, who were given early release. They were given a remission. Then we saw how, in fact, Bahubali Anand Mohan from the state of Bihar was actually, given a relief. And now this is Amarmani Tripathi and his wife. So how much of it does it play out before the topmost court of the country? Or the other two matters too are before the Supreme Court. So there is no kind of order yet passed. So we'll have to wait and watch as to how things pan out and whether or not some kind of a relief is given out to Nidhi Shukla, who has now approached the topmost court of the country. Remember, when this case has actually come up, it was too difficult for the police to actually interrogate in the first instance of Amarmani Tripathi, since he was somebody who was a very, very important man at that point of time when it comes to UP politics. But after, one of the servants who was working at Madhumita Shukla's residence started to open up interrogation, all of these, whole conspiracy was actually had come to light. And then and in fact, if you remember, when she was killed, she was almost 7 months pregnant, though the news came out about it much later. So how much of it does play up before the topmost of the country, whether some kind of relief is granted or not, is something that we'll have to wait and watch for after 8 weeks, when the UP government and others would come back with their responses with regards to this remission that has now been granted to the couple. All right, Ananya, thank you so much for that information. Let me also take this across to my colleague Amit Singh, who's joining us on the broadcast. Amit, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, हमने ये रिएक्शन प्ले आउट किया था अभी निधि शुक्ला की, जो डिसीज की सिस्टर हैं, और उन्होंने ये बोला था कि उनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है आज के दिन. उसके पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये बता दिया गया था, ये जानकारी दे दी गई थी कि एक प्ली ऑलरेडी है अगेंस्ट द रिलीज ऑफ द कॉन्विक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर केस. सो दे शुड हैव वेटेड ऑन दिस एंटायर डिसीजन, एंड येट they went on to go ahead and give the Tripathi couple a clean sheet and probably order that release. इसके वजह से कोई फर्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस पे? जी नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी याचिका दायर की थी राज्यपाल के पास कि उसे और उसकी पत्नी को रिहाई कर दिया जाए, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से 21 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो जेल में वो बिता चुका है. उसके बाद जब सरकार की तरफ से रिहाई नहीं हो रही थी, यूपी सरकार की तरफ से, तब अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दायर किया था, प्ली दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को. उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि उनकी रिहाई हो जाती है. तो जाहिर तौर पे यूपी गवर्नमेंट जो है वो केवल कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रही थी. फिलहाल आज ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को आज ही रिहा किया जाएगा.
और अभी थोड़ी देर पहले गोरखपुर जेल के जेलर से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शासन की तरफ से उनके पास अभी रिहाई के आदेश नहीं आए। तो जाहिर तौर पे आज जो हियरिंग होने वाली थी उसको लेकर वेट कर रहे होंगे यूपी गवर्नमेंट। जैसे ही अब कोर्ट का रुख देख लिया है, 8 हफ्ते का नोटिस जारी करके 8 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो जाहिर तौर पर रिहाई आज ही हो जाएगी। और यूपी गवर्नमेंट अब जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है उसी का हवाला देकर जाहिर तौर पर 8 हफ्ते बाद वो जवाब दायर कर देगी। जी। All right, Amit, thank you so much for joining us on the broadcast. More reactions are pouring in on this story. Let's take a look. मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल पे होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अपराधी ना तो जेल में हैं और ना उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मूसेवाला के हत्यारे अयोध्या में भ्रमण करते हुए देखे गए। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश एक बेहतर ठिकाना हो गया है अपराधियों के रुकने का। और ये दूसरी घटना अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की, पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। देखिए, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ये हमेशा उन लोगों का साथ देती हैं जिन्होंने गुनाह किया हो। हमने गुजरात के अंदर देखा है कि गुजरात में बिल्किस जिसका रेप किया गया, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया, गुजरात की सरकार ने उन लोगों को जेल से निकाल के मालाएं पहनाई, स्वागत किया। तो उत्तर प्रदेश में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी सिर्फ सत्ता चाहती है, उस